Namaste viewers. I hope you're all hale and hearty and taking good care of yourself as well as your loved ones. I'm Anupreet Kaur and I have here with me Miss Jyotsna. We are both from the Chandigarh Education Department. As promised earlier, we are back with another video. Earlier we had taken up reading skills, but this time we shall take up writing skills, particularly letter writing. You may think letters are a thing of the past, but believe me, they are not. It is a skill that each one of us needs to develop, and they are something which are going to come of use to us all through our lives. And if we take it from the examination point of view, 10 marks are assigned to the writing skills and 5 specially to the letter writing. Now I will take it up in a bilingual manner. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, राइटिंग स्किल्स उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पोर्शन है. आप कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ लिटरेचर लर्न किया और जाकर पेपर दे दिया. जैसे हमने आपसे पहले बात करी है, रीडिंग स्किल है जब आप पेपर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसी में से आंसर्स ढूंढ पाते हैं. राइटिंग स्किल्स में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बेस पर आपने आंसर बनाना है. ये नहीं कि आप इसको रट के चले जाएं, लेकिन आपको इतना इनपुट दिया जाता है कि आप अपनी बात उसके बारे में कह सकें. आपके मन की बात, आपकी सोच, वो सब हमारे सामने किसके ज़रिए आता है? राइटिंग स्किल्स के थ्रू, राइट? And like we say that each question carries its own answer within itself. तो अगर आप राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, आपको उसमें से बहुत सारा आंसर आ जाता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव दिस क्वेश्चन: एज अरमान खान, the school literary captain of Ujjwal Academy, Old City, Kiladrabad, you believe that languages can help bridge regional divides and promote unity. Write a letter to the editor of a national daily in about 120 words, suggesting the introduction of an online regional language learning program managed and run by student councils and language clubs in the city. The program aims to help residents who have recently relocated to a new region in picking up the local language organically. Share the importance and credibility of such a program and suggest a feasible way to execute it along with possible activities. डियर लर्नर्स, कई बार आप सोचते हैं कि आपने लेटर बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आए या मार्क्स कम आए हैं. उसके कुछ कारण हैं कि जब भी हम एक लेटर को चेक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेट ठीक लिखा है. अगर फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, पूरा है, तो 1 फुल मार्क मिल जाएगा. फिर देखा जाता है कि कंटेंट है, क्या वो सब कुछ कवर्ड है जो हमें कंटेंट में चाहिए. क्या उसमें आपने जो सजेशंस देने थे, जो इम्पॉर्टेंट बातें बतानी थी, जो इम्प्लिकेशंस हैं उस इशू के, या जो रिकमेंडेशंस आपने देनी हैं, जो आइडियाज़, जो सॉल्यूशंस आपने देने हैं, क्या वो सब कवर्ड है, तो उसके आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे. फिर और क्राइटेरिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ ठीक है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक है तो उसका 1 फुल मार्क मिल जाता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ में हम देखते हैं कि क्या आपका जो स्टाइल है वो इफ़ेक्टिव है, क्या आपका जो सीक्वेंस है वो ठीक ऑर्डर में है, क्या आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर यूज़ किया है, क्या आपकी टोन फॉर्मल है, क्या आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और फॉर्मल है. सिंस जो लेटर्स आपके सिलेबस में हैं, जो कोर्स में हैं, जो आपको एक्सपेक्ट करते हैं हम एग्ज़ाम में आएंगी, वो हैं लेटर टू द एडिटर या फॉर्मल लेटर्स होती हैं, तो इसमें आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए.
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेटर राइटिंग का, वो है एक्यूरेसी, जिसमें स्पेलिंग देखे जाते हैं कि आपने करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करे हैं, आपने पंक्चुएशन ठीक लगाई है, आपकी ग्रामर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सब ठीक है तो इसका भी 1 मार्क मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल वी हैव 1 मार्क फॉर द फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट, 1 for organization of ideas, 1 for accuracy, and all of these add up to 5 marks. अगर आप ये सब अच्छे से कवर करेंगे तो you can get full 5 on 5 marks. और लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कसर रहती है तो थोड़े कम हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से पूरे के पूरे 5 marks स्कोर करें। Now let's take up all these points one by one. First of all, we will take up the format of a letter. The format includes the address of the sender, the date, the address of the receiver, subject, salutation, the sender's name, designation, as well as the signature, and most importantly, the body of the letter. Now, when we take up the format, how do we get to know what address we should write as the sender's address or the receiver's address? Well, you have the answer in your question itself. When you read your question, you can underline this even as you're reading. For example, in this question we see, so here in this question we see that Arman Khan, who is the school literary captain of Ujjwal Academy, Old City, Kiladrabad. So the address is written right here for us. What is the address of the sender? Ujjwal Academy, Old City, Kiladrabad. And now we have to see what is the date. What is the date written here? 30th August 2023. The day you take your exam or the day you're writing a letter, you can write the date of that very day. Now this date can be written in other ways as well. You may write it only in numerals as 30.08.2023 or 30/08/2023. Another way of writing the date is August 30, 2023. And now we have to write the address of the receiver. Now who are we writing the letter to? The editor. Now in the question, it's written the address of a national daily. Now had they written the name of the newspaper, we would have taken that very name. But now we can write of any national daily of our choice. जिस भी national daily का, जिस भी newspaper का आपको नाम आता है, आप वही लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर भी लिख सकते हैं। So in this example, we have written India समाचार। अब कहाँ का रहने वाला है अरमान? किलंद्राबाद। तो we will write the address also of Kilandrabad. So here we take up the receiver's address as the editor, India Samachar, Jamnagar, Kilandrabad. Now we have to write the subject. अब subject क्या होता है? Subject is the main idea जिसके बारे में हमने लेटर लिखनी है। अब हमें subject कहाँ से पता चलेगा? ये भी question में लिखा है। It's written so clearly. Now we will write a letter to the editor suggesting the introduction of an online regional language learning program managed and run by student councils and language clubs in the city. तो हम क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें। अब इसी बात को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। कितना क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। बस इतना ही नोट कर लें और इसी को आप सब्जेक्ट में लिख दें। जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ब्रीफ होता है, 1 लाइन मोस्ट प्रेफरेबली, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता।
After the subject, we will write the salutation. Salutation होता है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरह से ग्रीट करते हैं. सो हम लिख सकते हैं डियर सर या डियर मैम या डियर मैडम. अब इसके बाद आएगी बॉडी ऑफ द लेटर और बिल्कुल नीचे बॉटम में आएगा योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं. और उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर. एंड वेयर डू वी गेट द नेम? राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में लिखा है एज अरमान खान द स्कूल लिटरेरी कैप्टन. So here we will write Arman Khan, and under the name we will write his designation. What is his designation? He is the captain of the literary club. So captain, literary club. And above the name we will also put his signature. Now this covers the format. If all of this is written correctly, accurately, and completely, you already have 1 mark in your kitty. Now we come to the body of the letter. Generally, the body of the letter comprises 3 paragraphs. The first paragraph is the introductory paragraph, and in the second paragraph we give more detail about the letter. In the third paragraph we write the conclusion of the letter. While we are writing the letter, there are some questions which are always covered. They are the WH questions. What, when, where, for whom, by whom, to whom, right? So these are the main questions which are covered in the letter. If it's a problem, we will write the problem, what are the causes of that problem, what are the effects of that problem, what are the solutions of that problem. So these are the things that we will always keep in mind when we write a letter. So while writing the letter, you can actually jot down all the points that come to your mind on a rough piece of paper. That is, collect your ideas. Then you will organize your ideas, put them together and put them in the right flow so that it is not a jumbled letter. Here you put one idea following another in the correct sequence so that it makes sense to the reader. So now, firstly you have collected your ideas, then you have organized them. Then you write a rough draft. And after that you will edit it. If you have made any kind of spelling mistakes or any kind of structural errors in the letter, those you will correct. There will be no grammatical errors after that. You will cover up all kinds of mistakes. Those will be edited, right? And in the end, you will write the main draft of the letter. You will redo it. You will rewrite the letter in the absolute correct and final form. And we call this the coder system. So how does the coder system work? C for collect your ideas, O for organize your ideas, D for draft your ideas, E for edit the draft, and R for redoing it correctly in the final form. Dear learners, remember I had mentioned that you will get 1 full mark if your format is correct. Well, there's a catch. Your format may be perfect. You will have covered the sender's address, the date, the receiver's address, and written your own name and designation and everything. But if you do not write the body of the letter, can you guess what your score is going to be? 0. It is very important to write the body of the letter to get the marks for the format. So the best way is to make a note of everything in the question and elaborate upon it in the body.
Do not be afraid of the very high language, the high sounding words. Even if you don't know, very good vocabulary is missing from your language, you don't know very difficult words, it's all right. You can write it in your own words in a very simple vocabulary and short simple sentences. आपको डरना नहीं चाहिए. एक बात याद रखें कि लेटर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है. इसमें स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है. चलिए सोचिए कि आपका इंग्लिश पे इतना कमांड नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं आते, आपको हाई साउंडिंग वर्ड्स नहीं आते. कोई बात नहीं, अगर आप सिंपल वर्ड्स भी लिखेंगे कुछ मार्क्स तो आएंगे. आपने फॉर्मेट लिख लिया, आपने कंटेंट में अपने आइडियाज़ दिए हैं, आपकी सोच है वहाँ पे, आपके आइडियाज़ हैं, उनके मार्क्स तो मिलेंगे. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, उसका भी हाफ मार्क मिल जाएगा. सो इवन इफ़ यू राइट अ सिंपल लेटर इन योर ओन वर्ड्स, यू विल डेफिनेटली गेट सम मार्क्स एंड दैट्स बेटर देन नॉट गेटिंग एनी, क्योंकि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से ही मिल गई है. अब ये तो हुई एग्ज़ाम्स की बात. ये जो लेटर राइटिंग स्किल है ये आपको आपकी सारी लाइफ काम आएगी. सिर्फ अब की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि अगर आप आगे जाकर कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू राइट जॉब एप्लीकेशन लेटर्स. You have some kind of an issue, some kind of a problem with any department, you need to write a letter to them to help them solve that problem. If you want to go abroad, you will have to write a letter to the embassy giving the purpose of your visit. So you're going to read letters, you're going to be able to write letters and act upon them as well, right? Now it is very important that we master this skill. Now some of you may think that, oh, in this day and age, who is writing letters? We write emails. Well, look again at this letter. What is different? Just the address. The rest of it remains the same. There is no difference between an email and a letter. Just that the email is sent on the internet. And there only the address, the style of the address is different. Apart from that, the content will remain the same. So this is definitely going to be handy for you for all your life. Do master this skill. If you have understood this video, it's going to be very, very useful to you. If you have any doubts, any questions, you can leave your queries in the comment box. We shall get back to you. Till then, stay happy, stay safe, and enjoy learning.